Then peritoneum is a higher vascular peritoneum. Then peritoneum is a higher vascular serous and semi-peritoneal membrane. So peritoneum can be used for the peritoneal dialysis. Peritoneum can be used for the peritoneal dialysis. So peritoneum can be used for the peritoneal dialysis. Peritoneal has two layer. Peritoneum can used for peritoneal dialysis. Then peritoneal has two layer. Peritoneal has काय आहे peritoneal has two layer. Peritoneal has Peritoneal has two layer. Peritoneal has two layer. Peritoneal has two layer. Peritoneal has two layer मध्ये outer peritoneal आणि inner visceral आहे. Then outer peritoneum responsible for pain. Then outer peritoneal आहे. This is responsible for pain. Then inner visceral आहे. जे peritoneum मध्ये inner visceral आहे. Peritoneal has two layer. Peritoneal has two layer responsible for the pain. Then inner visceral responsible for the secretion of the serous fluid. The inner visceral आहे ते responsible for of secretion of serous आहे. म्हणजे inner visceral आहे. inner visceral responsible for secretion of serous fluid आहे. inner visceral काय आहे responsible for the secretion of serous fluid आहे. Then peritoneal space it is contained the 50 ml serous fluid. 50 ml. Then ascites is excessive accumulation of fluid in peritoneal cavity is called ascites. Excessive accumulation of fluid. Ascites excessive accumulation of fluid in the peritoneal cavity, commonly seen in liver cirrhosis, hypoproteinemia मध्ये आहे. Ascites is excessive accumulation of fluid in peritoneal cavity, commonly seen in liver cirrhosis, hypoproteinemia. प्रोटीन कमी झाल्यावर असतो. देन आहे बुडल साइन विच इज अ बुडल साइन काय आहे बुडल साइन सुपाइन पोझिशन आहे. अँड असायटीसचा पेशंट आहे. असा पेशंटला जेंटल प्रेशर लागतो ओव्हर द अब्डोमिनल वॉल. ह्यालाच पुडल साइन म्हणतात. पुडल साइन किसे कहा जाता है तो पुडल साइन क्या होता है जो असाइटिस का पेशेंट रहता है उसको सुपाइन पोजीशन में सुले देते हैं. पेशेंट के जेनिटल प्रेशर लगाते ओवर द अब्डोमिनल. जो अब्डोमिनल में प्रेशर लगाते हैं उसे पुडल साइन कहते हैं. ओके, जो अब्डोमिनल में प्रेशर लगाते हैं उसको पुडल साइन कहते हैं. असाइटिस एंड पुडल साइन क्या होता है कि जब पेशेंट असाइटिस में हो पेशेंट को सीधा सुला देते हैं और पेशेंट के ऊपर जनरल प्रेशर क्रिएट करना हो उसको पुडल साइन कहते हैं. देन बिल्डिंग ऑन अपोजिट साइड. बिल्डिंग ऑन अपोजिट साइड रुग्ण एका साईडवर झोपवतात आणि पोट बिल्डिंग सारखा दिसतो त्यास पुडल साइन असे म्हणतात. बिल्डिंग ऑन अपोजिट साइड. बिल्डिंग और अपोजिट साइड रुग्णास एका साईडला बिल्डिंग ऑन अपोजिट साइड रुग्णास एका साईडवर झोपवतात आणि पोट बिल्डिंग सारखा दिसतो त्यास पुडल साइन असं बोलतो. स्पेशल मॉडिफिकेशन. व्हॉट इज द स्पेशल मॉडिफिकेशन इन पेरिटोनियम. Special modification in peritoneum.
Special modification in peritoneum. Peritoneum is a abdominal cavity. Falciform ligament. Falciform ligament. It is a help in supporting the liver and divided into two lobes आहे. हे falciform ligament. Special modification in peritoneum. Special modification. Which is a special modification in peritoneum? Falciform ligament. Falciform ligament. It is a help supporting to liver and divided into two lobes. Modification of the peritoneum of the falciform ligament. It helps supporting the liver and divided into two lobes. Mesentery means what? Mesentery is a provide attachment to small intestine with the posterior abdominal wall. क्या होता है mesentery? What is the mesentery? Mesentery, it is a provide attachment. Mesentery means provide attachment to small intestine with the posterior abdominal wall. Posterior abdominal wall से जो small intestine attach होता है उसे mesentery कहते हैं. Then mesocolon है mesocolon. It is a provide attachment of colon to the posterior wall of the abdomen. पोस्टेरियर वॉल ऑफ abdomen से कॉलन अटैच होता है उसे मेसोकॉलन कहते हैं. पोस्टेरियर वॉल के abdominal से स्मॉल इंटेस्टाइन अटैच होता है उसे मेसेंट्री कहते हैं. देन है जनरेटर ओमेंडम. ओमेंडम मीन्स फोल्ड रहता है. ए ग्रेटर ओमेंडम. इट इज अ लार्ज पेरिटोनियल फोल्ड विथ एक्सटेंड फ्रॉम ग्रेटर curvature of the stomach. Okay, greater omentum means fold of the stomach. Greater omentum means fold of the stomach. फंक्शन ऑफ द ग्रेटर ओमेंटम. जो ये पीछे का स्टमक का ग्रेटर ओमेंटम रहता है उसका फंक्शन क्या है? पेरिटोनियम फोल्ड. इट इज ए हेल्प स्टोरेज ऑफ फैट. ओके, स्टोरेज ऑफ फैट. Then है greater omentum. Greater, it is a helping storage of fat. It is a helping greater omentum. What is the greater omentum? It is a helping storage of fat. It is a help of greater omentum. Function of greater omentum काय है? It is a help storage of fat with help in insulation and immunity. Function of greater omentum. What is the function of greater omentum? Function of greater omentum. Peritoneum fold. It is helping storage of fat with helping insulation and immunity. Insulation of immunity साठी help करते. लेसर ओमेंटम काय करते तर lesser omentum. What is the lesser omentum? Lesser omentum fold. Omentum or fold peritoneum fold which is provide attachment of liver to the stomach and proximal duodenum. Then जे lesser omentum आहे. Then आहे lesser omentum liver to the stomach and proximal duodenum. Then a lesser omentum. What is the lesser omentum? Lesser omentum fold. It is a liver to attachment of proximal duodenum to tubal omentum. Tubal omentum. It is a small round tubal omentum. It is a small round protrusion which present over tail of the pancreas and splenic flexor. Planning structure, which is a planning structure. Most then है peritonitis, inflammation of peritoneum. Peritonitis,
ITIS means inflammation of peritoneum. Peritonitis means inflammation of peritoneum. Most common cause of peritonitis E. coli or risk factor. Most common of cause of most common cause of peritonitis E. coli, which है E. coli. Most common cause of uh, most common cause of peritonitis E. coli, risk factor appendix, sepsis, abdominal surgical E. coli. Most common cause of peritonitis E. coli, risk factor appendicitis, sepsis. Sepsis means what? Infection in blood. Sepsis means what? Infection in blood. Abdominal surgical peritoneal dialysis. Clinical peritoneal fever with chill tachycardia tachypnea. Features of peritonitis. then guarding of abdomen होते peritonitis पेरिटोनालाइटिस गार्डिंग ऑफ abdomen जिस साइड के abdomen मध्ये प्रॉब्लेम आहे त्या साईडचे मसल टाइट होते गार्डनिंग ऑफ abdomen ते साइड के मसल में प्रॉब्लम है गार्डनिंग फीचर्स ऑफ पेरिटोनलाइटिस देन गार्डिंग ऑफ abdomen जिस साइड के abdomen में प्रॉब्लम है त्या साइडचे मसल टाइट होते गार्डनिंग ऑफ abdomen जिस साइड के abdomen मध्ये प्रॉब्लेम आहे त्या साइडचे मसल टाइट होते देन rigid board like abdomen म्हणजे टेंडरनेस अँड प्राइड होते पूर्ण abdomen इन्व्हॉल्व असते रिगिड और बोर्ड लाईक abdomen then rigid board like abdomen tenderness and right होते पूर्ण abdomen इन्व्हॉल्व होते then diminish diminished vowel sound diminished diagnosis what आहे peritonitis diminished vowel sound diagnosis management of antibiotics retroperitoneal organ stomach pancreas kidney retroperitoneal organ is stomach this organ which is present behind the peritoneum देन पेरिटोनियम स्टमक के पीछे वाले ऑर्गन्स अच्छा स्टमक में जो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन रहते हैं उसकी लिस्ट है स्टमक के पीछे जो रहते हैं उसको रेट्रोपेरिटोनियल बोलते हैं देन सुप्रारेनल ग्लैंड सुप्रारेनल कंप्लीट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी एरिया सुप्रारेनल ग्लैंड आहे अरोटा आहे डिओडिनम आहे पॅन्क्रियाज आहे युरेटर आहे कॉलोन म्हणजे असेंडिंग और डिसेंडिंग कॉलोन आहे किडनी कंप्लीट रेट्रोरेटल ऑर्गन है इसे वगैरह जाने रेक्टम स्टमक के जो पीछे होते हैं जो स्टमक के पीछे है उसे रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन बोलते हैं स्टमक के जो रेट्रो मतलब पीछे पेरिटोनियम म्हणजे स्टमक रेट्रो मतलब पीछे पेरिटोनियम म्हणजे स्टमक के पीछे जो ऑर्गन होते हैं उससे सुप्रारेनल ग्लैंड बोलते हैं अरोटा बोलते हैं देने अरोटा बोलते हैं अब डिओडिनम बोलते हैं पेंक्रियाज बोलते हैं यूरेटर बोलते हैं कोलोन असेंडिंग डिसेंडिंग किडनी इस वजह से रेक्टम है सर्व स्टमक के पीछे रहता है फंक्शंस और मूवमेंट ऑफ जीआई ट्रैक का क्या है फंक्शंस क्या है तो इंजेशन आहे पेरिसिस्टोलाइसिस आहे प्रोपोर्शन आहे function of movement of GI tract इंजेशन आहे म्हणजे फंक्शन ऑफ मुवमेंट ऑफ GI
इंजेक्शन म्हणजे खाणे, इंजेक्शन म्हणजे खाणे. पेरसिटालसिस म्हणजे प्रोपल्शन आहे. डायजेशन आहे, डायजेशन आहे, ॲब्झॉर्प्शन आहे, ॲसिमिलेशन आहे, इलिमिनेशन आहे. ओके, देन इंजेक्शन म्हणजे टेकिंग इंटू फूड इंटू ओरल कॅव्हिटी. इंजेक्शन मीन्स वॉट? टेकिंग फूड इंटू ओरल कॅव्हिटी. इंजेक्शन मीन्स वॉट? इंजेक्शन मीन्स वॉट? Ingestion, taking into of food into oral cavity. Ingestion. इंजेशन, then इंजेशन मतलब काय? टेकिंग into food, taking food into oral cavity. Ingestion. Peristalsis, the propulsion. Peristalsis or propulsion means movement of alimentary canal. Alimentary movement of alimentary canal for forward shifting of food in GI tract known as पेरिस्टालसिस मूवमेंट. पेरिस्टालसिस फर्स्ट है खाने को शरीर में लेना, इंजेक्शन है आगे बढ़ाना. पेरिस्टालसिस और प्रोपोर्शन है. पेरिस्टालसिस स्टार्ट फ्रॉम द इसोफेगस एंड विद द एनल कैनल एंड एनस. पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्टार्ट फ्रॉम GI tract. Peristalsis starts from esophagus and with the anal canal and anus. Peristalsis controlled by autonomic nervous system. जो एएनएस कंट्रोल करते हैं. पेरिस्टालसिस कौन कंट्रोल करता है? पेरिस्टालसिस कंट्रोल बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. एएनएस कंट्रोल करते हैं. पेरिस्टालसिस कंट्रोल बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. एएनएस करते हैं. एएनएस कंटेन्स एसएन एंड पीएनएस. एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंटेन करतात. देन आहे सुप्रा देन आहे पॅरा एस एन एस. देन आहे एस एन एस आणि पी एन एस. एस एन एस आणि पी एन एस. देन है पेसमेकर ऑफ जी आई ट्रैक क्या होता है? में इंट्रिक और 24 प्लेक्सेस. पेसमेकर ऑफ द जी आई ट्रैक. पेसमेकर ऑफ जी आई ट्रैक. Pacemaker of GI tract. Okay, pacemaker of GI tract is then menetric or Burch's plexus. Pacemaker of the GI tract is menetric or Chebes plexus आहे. Pacemaker of GI tract. ANS. ANS means what? ANS मध्येच सिम्पॅथॅटिक नर्वस सिस्टीम आहे आणि पॅरासिम्पॅथॅटिक नर्वस सिस्टीम आहे. ANS देन आहे ANS. एएनएस म्हणजे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीममध्ये सिम्पॅथॅटिक नर्वस सिस्टीम आहे. पॅरासिम्पॅथॅटिक नर्वस सिस्टीम आहे. एस एन एसमध्ये डिक्रीज सिक्रेशन होते, डिक्रीज पेरिस्टालसिस मुवमेंट होते. एस एन एसमध्ये डिक्रीज पेरिस्टालटिक मुवमेंट होते, डिक्रीज सिक्रेशन होते. देन पॅरासिम्पॅथॅटिक नर्वस सिस्टीममध्ये काय होते? इन्क्रीज सिक्रेशन ऑफ जी आय आणि इन्क्रीज पेरिस्टालसिस मुवमेंट होते. ओके, एएनएस अंडर आहे जी पेसमेकर ऑफ द जी आहे. एएनएस अंडर आहे. एएनएस आहे. देन पेरिस्टाल मुवमेंट कसे अंडर होते? तर पेरिस्टालसिस मुवमेंट हे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम होते. इट इंक्लूड पॅरासिम्पॅथिक नर्वस सिस्टीम, सिम्पॅथिक नर्वस सिस्टीम. प्रोपोल्शन मीन्स फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड. Propulsion. Okay, peristalsis movements or propulsion means what? Forward movement. Then propulsion means forward movement of food. Proportion means forward movement of food. Digestion is a complex process in which large complex nutrition convert into small simple form in the complex mechanical and chemical process is called complex mechanical and chemical is called digestion. Proportion means what? Forward करणे. Then it is a complex of mechanism and chemical process. कार्बन डाइऑक्साइड नहीं सॉरी पॉलीपेप्टाइड